Now children, today we are going to start with chapter number 18, that is my country, India. So India is our country, we all are Indians, and it is a very big country. It is divided into 28 states and 8 UT. So people of different states speak what? Different languages and wear different types of clothes. There are many festivals. New Delhi is the capital and Hindi is our official language. So आपको बताना है न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है. हियर द मैप ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन टू यू. यू हैव टू मार्क द 28 स्टेट्स एंड यूनियन. नाउ रीजन्स ऑफ इंडिया. व्हाट आर द डिफरेंट रीजन्स? रिलीजन्स. नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजन ऑफ इंडिया. लेट्स स्टडी अबाउट द डिफरेंट रिलीजन. वी हैव हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड सिख्स. इफ वी टॉक अबाउट हिंदू, दे प्रे इन टेम्पल. मुस्लिम मॉस्क में जाते हैं, क्रिश्चियंस चर्च में, और सिख कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा. Now national symbol. Every country has its own symbol. Our country has symbols, and symbols are the symbol of what? Unity, integrity, heritage, culture and pride. And we must respect our national symbol. हमें अपने national symbols को respect करनी चाहिए. National flag, that is 3-colored तिरंगा. It has 3 band, different colors, saffron, white and green. And in between there is a chakra, जो आपके 24 hours को क्या करते हैं? Signify करते हैं. Saffron stands for courage and sacrifice and made by the martyrs to win freedom. White, peace and purity को बताता है. Right, green stands for prosperity, growth of nation. And there is also wheel और चक्र, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं. है ना? सेंटर में आपके क्या होता है? इसमें 24 स्पोक्स होते हैं जो आपके 24 आवर्स को बताते हैं. Then we have national anthem, that is Jan Gan Man, and it is written by Rabindranath Tagore. Then we have national animal, national bird and national flower. National animal tiger. ठीक है, ये किसका symbol है? Power का. Next is peacock. It is the symbol of beauty. Then we have lotus. It's a national flower and it is the symbol of, it stands for. Now national emblem, that is Satyamev Jayate. It is our national identity. Here you can see it has 4 lions. Only 3 is visible from the one side, right? And you can see there is a horse on one side and bull on the other side of the wheel. Satyamev Jayate is inscribed in the base of the act. यहाँ पे आपके बेस में क्या लिखा है? सत्यमेव जयते. We should respect all religions. सारे religion की respect करनी चाहिए. It is our duty to respect our national symbol. हमें अपने national symbols की भी क्या करनी चाहिए? Respect करनी चाहिए, right? This is all in this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in next class. Thank you.